up guys, welcome to my channel or welcome back to this video. So in today's video I did this Diwali apt makeup. Actually I haven't done this makeup here, मैंने ये इंस्टा के लिए किया है, तो वीडियो पोर्ट्रेट मोड में है, वो यहाँ चलने वाली है. साइड बाय मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड एंड व्हाई आई हैव यूज्ड इट, बिकॉज एवरी टाइम आई पुट अप ऐसा कोई भी ट्यूटोरियल टाइप का वीडियो तो पीपल डू आस्क अबाउट व्हाट प्रोडक्ट यू यूज, व्हाट लिप शेड एंड ऑल ऑफ दैट. एंड उस टाइम मैं टोटली कहीं और होती हूँ, कुछ और कर रही होती हूँ, तो आई जस्ट डोंट रिमेंबर कौन सा शेड मैंने यूज़ किया था और मैंने एक्चुअली कौन सा लिया हुआ है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर समवन विल आस्क आई विल रीडायरेक्ट देम टू दिस वीडियो सो दैट दे नो, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू हाइड एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू मेकअप, स्किन केयर. सो everything will be there on your plate to choose, pick and judge as well. So that's it, not that's it, abhi to shuru ho raha hai. So let's get started and see what products I've used, why I've used it, what's the plus point and how I did this makeup. तो मैं बात भी करती रहूँगी, चलता भी रहेगा, तो मुझे सुनते भी रहना और ये भी देखते रहना. चलो चलो, सबसे पहले बेस को करने के लिए I have used this oil from Blue Nectar Kumkumadi face serum. You can take the screenshot. It really amp up my base game and also the foundation that I use. I'm going to talk about that later in the video, but this one really adds glow and makes your base very glowy, very moisturized. Patchy नहीं होता है, but take little amount, ज़्यादा मत लेना वरना slippery भी हो जाएगा. It will be very difficult to work with this. So if you're not into makeup and आपका hands on नहीं है उस पर, तो avoid oils, but if you know how to work with that then this is the best. The foundation, oh my god, I am in love with this foundation. This is my first time using this LA Girl Pro coverage and honestly go nowhere else, buy no other product. This is one product that you need. Oh my god, I cannot emphasize. I really feel कितना miss आउट किया मैंने इन लाइफ बाय नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस वन. एंड when you use this, एक तो ये full coverage है, also very dewy, so if you have a dry face this one will work best for you. Also I've seen लोगों का वैसे combination या oily face होता है, but every time they put on makeup उनका dry हो जाता है. So for that go with this foundation. This is the best one. I just love, I'm obsessed. और ये गिर भी गया अभी just गिरा ये and I was like oh my god. But anyways, so this is the one, this is the foundation I used and आपको बिल्कुल भी कलर करेक्शन की नीड ही नहीं है, वो स्टेप पूरा हट ही गया by using this one. So full coverage foundation, good ones really do make a difference. आपका मेकअप quick हो जाता है. So get this, I use this one and in love, literally in love. इसका एक pump will cover all your face, so you don't need a lot of product. It's totally worth it, so just get this. Now to conceal my under eyes, I've used this one from L'Oreal and you know this product, so many people talk about it. Every other person is using this on YouTube, Instagram, everywhere. Makeup artist, influencer, everyone using this and I'm telling you, get it. Sale आए कुछ भी आए, just इसको ले लो. 4 प्रोडक्ट रखो, बट वो ऐसे होने चाहिए ना कि आपने एक बार लगाया डन, एक बार लगाया डन अगेन. इसके साथ भी आपको कुछ भी कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है. अर्लियर दिस आई वाज यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर टू एड more coverage to my concealers that I was previously using, but this one, oh my god, get it. I used this under my eye and in just one dot sorted. For contouring I have used my Glam contour stick. Again a very good, very pigmented product and blends really easily. So मैंने बहुत सारे contours यूज़ किए हैं and वो एक पैच बना देते हैं या फिर ब्लेंडिंग में उनका प्रॉब्लम आता है. दिस वन इज़ लाइक, आप ये देखो, ये स्क्रैच किया and it just blends so easily and also leaves its pigment पूरा completely gone नहीं होता है, which is the plus. and pigment तो है ही, so आपको बार बार प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ता, जिसकी वजह से आपका मेकअप बहुत क्विक होता है. So if you're into makeup artistry, these kind of products really helps, because if you have so many clients, तो आप बार बार प्रोडक्ट लोगे तो बहुत lengthy process हो जाएगा. So this one again a very good product. Invest in this. Now for a blush, I have used this one from Love Earth. This one is creamy matte. This is the huge one and this is the singlet, so you can invest in this. And if you're into makeup artistry, get this. Very good, again very good pigmentation, blends really easily, great for like
brides and stuff, just don't go directly. ब्रश में लो एंड देन पुट इट ऑन बिकॉज इसका पिगमेंट अगेन बहुत हाई है. सो बाय वॉकिंग विद द ब्रश यू कैन रियली टेक कंट्रोल. तो यूज़ इट, टेक इट बाय ब्रश. और एनी वे ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए. मैं पहले कर देती थी बट नाउ आई अंडरस्टैंड एंड आई सी द डिफरेंस जब आप ब्रश की हेल्प से लगाते हो और जब आप डायरेक्टली स्टिक से ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो. देर इज़ अ डिफरेंस. प्रिसीजन और जो ऐसा ब्लेंडेबिलिटी होता है ना वो ब्रश से लेके आता है. तो ऑलवेज यूज़ योर ब्रश. नेक्स्ट वन आई यूज़ दिस द मिनी पैक लूज पाउडर. इट्स अगेन वेरी गुड वन. मैंने इसको खरीदा था. दिस वन इज ट्रांसलूसेंट 04. आई bought this because I really wanted to see the performance. और जब आप मिनी लेते हो या फिर सैम्पल्स लेते हो तो you really understand कि आपको इसके बड़े वाले दिवाली, हैप्पी दिवाली. सो इसके बड़े वाले टब में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं. एंड आई एम डेफिनेटली गोना डू दैट बिकॉज दिस वन अगेन अ वेरी गुड पाउडर, ट्रांसलूसेंट वन. इट डजंट लीव दैट वाइट कास्ट. जब आप फोटोग्राफ्स लेते हो, फ्लैश में होते हो, तो एक जो वाइट कास्ट आ जाता है ना, वो ट्रांसलूसेंट पाउडर अगर आपके अच्छे नहीं हैं, अच्छे से गए नहीं हैं और वाइट कास्ट छोड़ रहे हैं, वो तब आता है. तो दिस वन डजंट लीव दैट. तो आई रियली एंजॉय दिस वन इज वेल. ऑल्सो विद दिस टेक दिस पिज़्ज़ा पफ. आई एम नॉट सेइंग कि पैक का ही लो, बहुत सारे हैं तो कहीं से भी ले लो, बट मेक श्योर इट इज़ दिस शेप. इट रियली हेल्प्स यू टू गो इनसाइड. लाइक ऑल्सो बहुत ईजी हो जाता है आपका पूरा सेट करना फेस. आप ब्लेंड भी कर सकते हो, फाउंडेशन भी लगा सकते हो इससे. आई यूज़ इट टू सेट माई फेस ओनली बट इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट. लाइक गोज रियली in the corners and set it all out. Sweating भी हो रही है तो just take it and dab dab dab. Very handy product, so just get this. Now for mascara and eyes, I've used very basic products. So this one is Swiss Beauty Precision Thickening Long Lash Mascara. Thickening तो not really, but it does lengthen your lashes. और बहुत thin सा wand है तो it does coat every single lash of yours. तो बहुत प्रिसीजन के साथ आप अंदर अंदर वाली लैशेस भी होती हैं उनको भी कोट कर सकते हो. फैलता नहीं है, लगता नहीं है लिड पे. तो दैट्स रियली नॉन मैसी. तो आई लव दैट पार्ट अबाउट दिस मस्कारा. वेरी अफोर्डेबल. यू कैन यूज इट, गिव इट अ ट्राई. And yeah, there are other ones also. I am keen to try other products. तो जब मैं करूँगी तो I will leave my reviews. But this one I used today. Now for my eyes, as you can see मैंने बहुत basic रखा है, कुछ भी नहीं करा मैंने, crease वगैरह भी नहीं बनी. I just took this glitter because whatever kind of videos, makeup videos I am making now is centric for people जिनको नहीं आता, जिनके पास टाइम नहीं है, and नहीं आते हुए भी वो ऐसा मेकअप अचीव करना चाहते हैं जिससे कि लगे that they know how to do it. So this one is from Swiss Beauty. मैंने इसका ये वाला शेड लिया बस और इसको टैप कर दिया सेंटर में और एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया. That's it. That is what there on my lid. Now on the lower lash I took purple shadow from this Beauty Glazed palette. से जो purple shade है, this one I took this one and put it directly on my lower lash and that's it. और हाँ, मैंने काजल जो है white कोल लगाया है. That is from Mars. So yeah, that's it. 3 products and I'm good to go. मैंने बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया. Lately I've not been spending time on my eyes because I now understand कि in reality, in real life, nobody goes very crazy when it comes to eyes. Yes, you want your base to look very seamless, so I pay more attention to that. And moving forward I just want to do that so that it looks more real. because जो भी हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो अगर reality में हम use ही नहीं कर पा रहे तो what's the point, right? So that is why I am focusing more on base products, base and all of that. And eyes के लिए this much you can definitely, I can pull it off totally. It's not too much or not on your face. People will love it. So that's on my eyes. And for my lips, yes, I've used the mix of these two. This one is from Lover. The shade Angel Kisses, very good shade. I am in love, but it does wash you off. So इसके साथ थोड़ा सा pink add करोगे ना तो it will really look like this. I like this kind of nude जिसमें एक nude element भी हो, थोड़ा सा pink या red का tone भी हो, so that I'm not looking wash off. So that is why I mixed these two. This one is from Insight
creamy lip and cheek tint. You can put it as is. It's a very beautiful shade, but I mixed these two together to get this one. So I'm always mixing when it comes to lip shades because I don't know, I love doing that. So that's about it for my base. Also मैंने कोई highlighter नहीं लगाया because मेरा face already इतना चमक रहा है, मेरे को और नहीं चमकाना था. तो lately I've not been trying highlighters. I'm not crazy about them. Instead, illuminating primers, illuminating base products does give you that element, hint, और naturally glow लगता है. ऐसा नहीं लगता कि आपने extra layer add करी हुई है highlight की. And that's it. I hope you like this look. I am totally loving it. I am ready for Diwali. Like, this is what screams Payal. This is me. Totally my vibe. And if you do this kind of makeup, make sure you tag me. And for my brows, I've used very simple Nika eyebrow pencil. That's it. Yeah, that's it. I hope you've liked. Make sure you like, share and subscribe. I shall see you in my next video. Bye.